I've never had anyone complete the words I say. So good morning. तो बहुत लेट हो गया आज, एक्चुअली निकलना था खारदुंगला नुब्रा के लिए. थोड़ा लगेज यहीं पे रख दिया है गेस्ट हाउस में. वी आर कैरिंग मिनिमल लगेज बिकॉज रोड्स बहुत ख़तरनाक है, सो वी डोंट वांट टू टेक रिस्क. आज का प्लान है खारदुंगला जाना, उसके बाद टू डिस्केट एंड देन हुंडर. इट्स हार्डली 160 किलोमीटर्स, ज़्यादा नहीं है. वी विल बी रीचिंग बाय इवनिंग. खारदुंगला इज़ 18,000 प्लस फीट्स, सो वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू सी. पता नहीं कैसा रहेगा वहाँ पे एनवायरनमेंट, but we are prepared for it. So it's hardly 35 kilometers. In 35 kilometers we will be like climbing almost 6,000 feet. So that is how incline it is. Naresh bhai, excited very much? Yes. From here to Nubra, Nubra to Pangong, Pangong to Leh. So it's a 2 days plan. All the best for me, myself. Starting now. 4 bikes, 2 बाइक अभी रेडी होना है. 2 bikes are ready to leave, waiting for 2 other people, then we'll leave. चलो मिलते हैं बाइक पे. सुबह 9 बजे निकलना था. इट्स 12:20 ऑलरेडी. गर्मी बहुत है. डोंट नो हाउ मच टेम्परेचर इट इज़. आराम से 25 डिग्रीज होगा. यहाँ पे परमिट दिखाना पड़ता है और सब बाइकर्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि फ्यूल स्टॉप यहीं पे लास्ट है. इसके बाद नुब्रा में मिलेगा. सो हमारा तो रेंज है 320, सो नो इश्यू. नुब्रा में भरवा लेंगे. खारदुंगला इज़ 34 किलोमीटर्स एंड ये 34 किलोमीटर्स बहुत हेवी इंक्लिनेशन रहेगा. एल्टीट्यूड राइज होगा. इसके वजह से वी हैव टू एटलीस्ट stay in Leh for 2 days to get used to the environment and then we can continue ahead. Pangong के लिए 4 दिन लगते हैं. बहुत ही narrow road है. You have to be very careful in this kind of roads. You can't go fast. I've never had anyone complete the words I say. You told me the one you're with can't make you feel this way. If the shoe fits, wear it. If there's no comparing, this is true love, I swear. And we need to make a choice right now. हवा बहुत तेज़ चल रहा है. We are almost on the top. एक कॉफ़ी पी रहे हैं थोड़ा बॉडी को सेट करने के लिए. बट लुक एट दिस व्यू गाइस. वाओ. Hello guys, welcome to my YouTube channel. कॉफ़ी पी लो. Amazing. So we can officially say that we are on the top of the world. Correct. Right? So on our bikes that too. It's a big achievement. अभी ऊपर जाना बाकी है. अभी ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर है ऊपर जाने के लिए. दैट विल बी ऑन द टॉप. सो ये रोड ऊपर जिग जैग जा रहा है, हेयरपिन बेंड. ऐसे लोकेशंस में सबसे कम दिखते हैं एनिमल्स और ये हमको दिख गया याक. मैं मनाली में देखा था, इट हैड फुल फर, लेकिन इसको थोड़ा कम है. यहाँ पे एंट्री करवाना होता है. बॉडी में चेंजेस दिखना शुरू हो गया है ड्यू टू lower oxygen level, but have to be very calm. ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उछल पुथल नहीं करना चाहिए. We are almost there. More 7 kilometers I think so, and we will be on the top of the world. It's 18,000 plus feet. And coming here is a challenge. बहुत हार्ड हो गया है. Wow. I have seen a lot of vehicles which broke down in middle. So you have to maintain your bike properly if you want to get here in this kind of situations. No risk to be taken, no conjusi. This is the top.
So this is welcome you to the top of the world, mighty Khardungla. Naresh! Video. और ये पूरा ग्लेशियर, यहाँ पे थोड़ा ख़राब रास्ता है, आई थिंक थोड़ी देर तक है. Time is 3:50 and just completed 47.5 kilometers. A lot of bikers, a lot. डिस्किट है 54 किलोमीटर्स. लगने वाले हैं अराउंड 1.5 आवर, क्योंकि रोड बहुत नैरो है और हिली है. बट इट इज़ ब्यूटीफुल. रोड ख़त्म. सिंस लास्ट 3 kilometers it's just like this, off-roading. The road is getting more and more intense off-roading, so I have to be more careful. Don't know till where the road is like this. This is far better situation. If there was a rain, then it would be like horrible situation. Completed 80 kilometers and here it's completely different feeling altogether. It's as if we are riding in desert. There's a river flowing here, don't know which one, but it looks so beautiful. We are almost reaching Diskit, Diskit. That's 15 kilometers from here. So when you come to Diskit, there is a petrol bunk 15 kilometers before, as well as in Diskit. There are 2 petrol bunks here, so you can fill wherever you want. The landscape, it's a flat land. Remember we said with faith we try to let this pass. And no matter how much we avoided, we would still cross paths. If the shoe fits, wear it. If there's no comparing, this is true love, I swear it. And we need to make a choice right now. So this is Nubra Valley, and it's completely different than other valleys because of the color difference as well as the width. This is so huge, very huge. Wow, that's amazing, yaar. Ooh. Don't know how this has been formed. You can see rocks on the left and the right, but there is a sand kind of flow. यहाँ पे temperature is normal, it's not chill. हंडर या हुंडर पता नहीं कैसे स्पेल करते हैं यहाँ पे, but I will call it Hunter. There is sand dunes here, so you can see the sand, रेगिस्तान के जैसा.
It is hardly 20 minutes from Diskit. This is under sand dunes और मस्त एरिया है ये, खुला मैदान और रेती। ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि गाड़ी फंस जाएगा और ऊपर से लगेज भी है। बट वी जस्ट केम हियर टू चेक कैमल राइड, डबल हम उतरना है।